found, it's important to evaluate them before using them in your assessment. हाँ जी, तो दे आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. आपको कहाँ से आप सोर्सेज ले रहे हैं? आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू ले रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ले रहे हैं, आप कहीं आपने लाइब्रेरी में से आप बुक्स लेकर आए हैं इंफॉर्मेशन के लिए. आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इसमें लिख सकते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. आपने सोर्सेज तो आपने इकट्ठे कर लिए, लेकिन उसकी क्या क्वालिटी है? यूजफुल है, नहीं है? या आपने जो भी सोर्सेज लिए हैं वो रिलायबल हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दैट इज द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो जस्ट वेट. Okay, now sharing the screen. Quality of information. Information under the management information systems. Okay, before that we want to know what is in some context for its receiver. When information is entered into and stored in a computer, it is generally referred to as data. After processing such as formatting and printing, output data can again be perceived as information. Okay, let's see what are the qualities of good information. So first one is it must be relevant. Relevant in the sense there is a connection with the subject at issue. Then only that information will be very good. Other thing is it must also be clear. That means easy to perceive or understand. If it is clear only, it's called as a good information. So other thing is there must be sufficient accuracy. That means enough to meet a need or purpose. Then only it will be a good information. So other thing is there must be sufficient accuracy. Sufficient accuracy means enough to meet a need or purpose. I already told. The other thing is it must be complete. Then only we can bring a whole with all the necessary parts or elements also there. Other thing is this trustworthy. That means the information must also be trustworthy. It want to be reliable, then only it will be good in the future. So concise means the other thing is it must be concise. Concise means giving a lot of information clearly in a few words. Okay, the other thing is information must be provided in a timely manner. That means it want to be finished very quickly. That information want to be finished very quickly. The other thing is it must be communicated to the right person. That means we already know the value of information is based on the ability to take action.
So if we want to take any action, that information want to go to the right person. So other thing is it must be also be communicated via the right channel. So channel in the sense it called as a medium also. It mean it is used to communicate a message. So we want to select the right channel. So if we want to select the right channel, it will be a good information. So other thing is less costly than the value it provide. That means simply cost is very low and benefit is very high. So these are the things we can. So these are the qualities of good information. If you want to write in points, because आपकी बुक में पूरा पैराग्राफ है, तो अगर आपको लगता है कि हम ये 10 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, तो आई थिंक आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज बेटर। बहुत इजी 10 पॉइंट्स दिए हैं और हम फर्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, ताकि आप इसे साथ साथ नोट डाउन कर सकें। Do you want to note it down? Yes, ma'am. ओके, क्योंकि बुक में बेटा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, उसमें बेटर है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंफॉर्मेशन आपका होता रहेगा, आप मुझे बताते जाइएगा, मैं आगे स्टार्ट कर दूंगी। कंटिन्यू करें नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक आपका शेयरिंग पोर्शन हट गया। There is a connection with the subject at issue. Then only that information will be very good. Other thing is it must also be clear. That means चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट ऑल्सो बी क्लियर। क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत टू द पॉइंट, जिसे हम कहते हैं कि आपको बात करनी है। फर्स्ट इज रेलिवेंट, सेकंड इज क्लियर, इट मस्ट ऑल्सो बी क्लियर। डन? Yes, ma'am. easy to perceive or understand. If it is clear only, it called as a good information. So other thing is there must be sufficient accuracy. That means enough to. हाँ जी, सफिशिएंट एक्यूरेसी। Yes, ma'am. To meet a need or purpose, then only it will be a good information. So other thing is there must be sufficient accuracy. Sufficient accuracy means enough to meet a need or purpose, I already told. The other thing is it must be complete, then only. द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट। आधी हमें इंफॉर्मेशन नहीं हम कभी भी यूज करते हैं कि आपको किसी ने कुछ इंफॉर्मेशन कही, आप सुनी सुनाई बातों पे हम कहते हैं ना हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हमेशा इंफॉर्मेशन अगर आप कहीं से भी ले रहे हैं
क्या आप आगे भी उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने लिए, तो आपकी वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए. इट शुड बी कंप्लीट. Yes, ma'am. Done. Only we can bring a whole with all the necessary parts or elements also there. Other thing is this trustworthy. That mean the information must also be trustworthy. It हाँ जी. नेक्स्ट पॉइंट. Truthful information. The information must also be trustworthy, means it is able to be truthful, honest. Yes, ma'am. Done. want to be reliable, then only it will be good in the future. So concise means the other thing is it must be concise. Concise means Yes. Next, sixth point. It must be concise. जिसको हम कई बार हिंदी में भी बोल देते हैं संक्षिप्त, छोटे वर्ड्स में. बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स में नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन. वही सेम चीज है, टू द पॉइंट होनी चाहिए आपकी बात. Yes, ma'am. Done. giving a lot of information clearly in a few words. Okay, the other thing is information must be provided in a timely manner. That means हाँ जी. नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ. Yes, ma'am. it want to be finished very quickly. That information want to be finished very quickly. The other thing is it must be communicated to the right person. That means we already know the हाँ जी. एट पॉइंट. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन. Yes, ma'am. Done. value of information is based on the ability to take action. So if we want to take any Yes, ma'am. action, that information want to go to the right person. So other thing is it must be also be communicated via the right channel. So channel in the sense It must also be communicated via the right channel. Yes, ma'am. Done. And the last point, it called as a medium also. It means Yes, ma'am. it is used to communicate a message. So we want to select the right channel. So if we want to select the right channel, it will be a good information. So other thing is less costly than the value it provide. That means simply cost is very low and information must be less costly than the value it provides. This is your last point. Qualities of good information. एग्जाम्स में भी पॉइंट्स में लिखेंगे, दैट इज बेटर कि आप पूरा पैराग्राफ लिख लें. पॉइंट्स में क्लियर होता है कि हाँ नॉलेजेबल है, स्टूडेंट्स को पता है टॉपिक के बारे में. Yes, ma'am. Done. चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग जो आ रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
दैट इज स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कहाँ अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं? Just wait, I'm sharing the screen. कंप्यूटर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर्स में ही करते हैं। और अगर हम स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें आपकी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हमने आई थिंक पढ़ा भी था ना, स्टोरेज डिवाइसेस 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। To store data, does a computer store things like the way we humans do? No, Rennie. A computer can only understand machine language or binary language. This language is called low-level language. The low-level language uses the binary units of 0 and 1. The short form of binary digits is bits. हाँ जी, कंप्यूटर्स जो है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशंस को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, 0 and 1, मशीनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर्स ना तो इंग्लिश समझता है, ना हिंदी समझता है, या कोई और लैंग्वेज। उसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, दैट इज मशीनरी लैंग्वेज। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेव करते हैं, कंप्यूटर में सेव करते हैं, वो उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड देन जब आप उस फाइल को रिट्रीव करते हो, आप उस फाइल को लेते हैं, आउटपुट देखते हैं, तो वो वापस मशीनरी लैंग्वेज से कन्वर्ट होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो दैट इज द प्रोसेस। हम कभी भी हम सोचते हैं हमने ए प्रेस करा और कंप्यूटर ने हमें स्क्रीन पे ए दिखा दिया, बट एक्चुअली ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितना जल्दी कन्वर्जन हुआ है। Bits and bytes are the most common units of storage in a computer. Tell me more about bits and bytes. A bit is actually the short form of the binary digits 0 and 1. It is the smallest unit recognized by the computer. What does this 2 binary digits or bits do? All sorts of information like words, audio, video can stored as patterns of these 2 digits 0 and 1. The digits 0 and 1 are recorded as pulses of electricity on tiny electric circuits. If a circuit is carrying an electric pulse, it is 1, and if not, it is 0. Each input given to the computer has to be coded as a combination of pulses and non-pulses. What is the difference between bits and bytes? Bytes are bigger than bits. 8 bits make 1 byte. A byte is the smallest storage unit to store even a single character. It implies that 1 byte or 8 bits are required by a single character to store in memory. 1 kilobyte consists of 1024 bytes. So, 1 kilobyte contains 8192 bits. 1 megabyte is made up of 1024 kilobytes. 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte. Where are these bits found in the computer? The bits are in the electronic circuit, which are...
अब तो हमारे पास गीगाबाइट के आगे भी आ गया टेराबाइट, टीबी, जिसमें हार्ड डिस्क आती है हमारे पास। और उसके बाद कौन सी आती है बिट टेराबाइट के बाद? पेटाबाइट। पेटाबाइट, यस। पेटाबाइट में तो अभी तक कुछ नहीं आया या कुछ आया है अभी हमारे पास? हार्ड डिस्क आई है पेटाबाइट में। टेराबाइट तो मैंने सुना है कि हमारे पास मैम हार्ड डिस्क टेराबाइट की आ गई है, हाँ हाँ बट जी मैम। हाँ, पेटाबाइट में भी आ गई है। मैम नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, मे बी, हाँ, मैं भी आई एम इसी, हाँ, नॉट नो। मुझे भी एक्चुअली आइडिया नहीं है पेटाबाइट का, पर ये था कि हाँ अभी आएगा, पेटाबाइट आएगी आफ्टर टेराबाइट, बट आई है या नहीं मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। हार्ड डिस्क हमारे पास टेराबाइट तक आ चुकी है मार्केट में, हम लोग यूज भी कर रहे हैं टेराबाइट की हार्ड डिस्क, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम सेव करके रख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव अभी तक हमारे पास सिर्फ जीबी में ही आई है, गीगाबाइट्स में। पेन ड्राइव हमारे पास टेराबाइट्स में नहीं आई है। सिर्फ एक हार्ड डिस्क ऐसी है जिसको अभी तक हम टेराबाइट की फॉर्म में ले लें। Are stored in the chips. These chips are tiny pieces of semiconductor called silicon. Millions of circuits are assembled on each chip. Where are the chips in the computer? All the chips in a computer are mounted on boards called printed circuit boards or daughter board. These daughter boards are attached to a motherboard. Look, this is the motherboard in a computer. मदरबोर्ड हमारा मेन पार्ट है हमारे सीपीयू का, हमारे सिस्टम यूनिट का मेन पार्ट है, जिसमें आपकी रैम रोम चिप्स इंक्लूड होती हैं, आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, इवन आपके सारे डिवाइसेस जो हैं इसी मदरबोर्ड से अटैच्ड होते हैं। बिल्कुल सेम हमारे घर में जैसे हमारी मम्मा हमारे घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सब उनसे अटैच्ड होते हैं, सेम ऐसे ही हमारे सारे डिवाइसेस इस मदरबोर्ड से अटैच्ड होते हैं। और अगर कभी मम्मा हमारी बीमार हो जाती हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम घर को कैसे मैनेज करें, या कभी वो कहीं चली जाती हैं तो भी पीछे से सारा घर बिखर जाता है, जिसे हम कहते हैं ना कि ना खाने का समझ नहीं आता, कपड़ों का समझ नहीं आता। तो जिस तरह से मम्मी पूरे घर को संभाल के रखती है, आप सबके साथ अटैच्ड रहती हैं, सेम ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की मदरबोर्ड है। कई बार जब हम अपने लैपटॉप्स को एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं तो हमारी सिस्टम की मदरबोर्ड डैमेज हो जाती है, और अगर मदरबोर्ड खराब हो जाती है तो हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होता। तो ये भी एक रीज़न है, कई बार हम कहते हैं हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, हो सकता है वायरस आ गया, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। कई बार जब आप एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं, हीट से भी आपका मदरबोर्ड बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। A motherboard is an electronic circuit board in a computer which interconnects hardware devices attached to it. It means one or more central processing units are attached to a motherboard. Let us now look at the memory of a computer. As दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर चिप। अभी ये मेमोरीज के बारे में you बता। already know by now that the computer stores all the work done on it. All the information is stored in the computer memory is made up of chips. There are two kinds of memory, primary and secondary. ओके, जस्ट वेट एंड शेयर इट अगेन। अब हम लोग मेन अपने मेमोरी वाले पार्ट पर आ गए हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। No, RAM and ROM
are two kinds of primary memory of a computer. Correct, Rennie. The primary memory is the part of the computer which stores data temporarily during execution. The computer's primary memory let us know about the amount of data that a computer can store in it. Since you already know that the primary memory is the RAM and ROM, let me tell you more about them. The full form of RAM is Random Access Memory. RAM can store data and instructions only when the computer is turned on. You can read and write data on the temporary memory. If the power suddenly goes out, all the data stored on it is lost. So RAM is also known as volatile memory. ROM stands for read-only memory. It stores programs and instructions which are required to run the programs. Programs stored on the ROM can only be read. ROM holds data permanently. You cannot write on the ROM. The information on ROM does not get wiped out when the computer is turned off. PROM, EPROM, and EPROM are three different kinds of ROM. PROM stands for Programmable Read-Only Memory. The information that is recorded on this cannot be changed. EPROM stands for Erasable Programmable Read-Only Memory. The stored memory can be erased by exposing it to ultraviolet light. EPROM stands for Electrically Erasable Program Read-Only Memory. The information written on it can be erased by using electric signals. This memory type is more flexible than EPROM. Thank you for the information, Kliko. हमारे में मेनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें आपको रैम, रोम और सेकेंडरी डिवाइसेस के बारे में बताया. But what is secondary memory? The place where information can be saved is called a secondary memory. It is also called auxiliary or external memory. CDs, DVDs, pen drives, and hard disks are examples of secondary memory. I know that CD means compact disk. It can store and read data and programs. That's right, Rennie. And what are DVDs? DVD means digital versatile disc. It is flat and round and looks very similar to a CD. It can store more data than a CD. Correct. CD. हाँ जी, तो CD एंड DVD ये दोनों आपके ऑप्टिकल डिस्क हैं. लुक में अगर आप देखो तो दोनों सेम लगती हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो फिर मेन डिफरेंस कहाँ आता है CD और DVD में? कहाँ पे होता है मेन डिफरेंस? स्टोरेज. CD में हमारी कितनी होती है मिनिमम स्टोरेज? 700 MB. यस, 700 MB, मेगाबाइट. हमारे वर्ड की जो फाइल है वो हमारी KB में होती है, किलोबाइट में. तो इसके अंदर आप मेगाबाइट, किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, 700 MB तक आप सेव करके रख सकते हैं CD में. यानी आप मान के चलिए आपकी एक मूवी हम CD में सेव कर रहे हैं. अगर हम कंपेयर करते हैं DVD का, तो अगर आप CD में 1 मूवी सेव कर रहे हैं तो DVD में हम 3 मूवीज सेव कर सकते हैं. DVD की क्या है कैपेसिटी? 4.7 GB. यस, 4.7 GB, गीगाबाइट में आ गया. और अब इससे भी बड़ी एक और आ रही है हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क. कौन सी आती है एट प्रेजेंट जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं? और मोस्टली अब हमारे पास जैसे शादी के फंक्शंस होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पूरा फंक्शन सिर्फ एक ही ऑप्टिकल डिस्क में आ जाए.
तो उसके लिए आजकल हम लोग यूज ब्लू कर रहे रे हैं ब्लू रे, हाँ ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क। और ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी 25 GB टू 50 GB होती है। आजकल हम एक नई डिवाइस पे हम पहुंच गए हैं। अब हमने सीडी को भी धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। जैसे हमने फ्लॉपी को हमने बिल्कुल हट गई मार्केट से, क्योंकि फ्लॉपी की मेमोरी बहुत कम थी। अब उससे ज़्यादा एडवांस आ गए हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो सेम ऐसी अब सीडी धीरे धीरे मार्केट से हटती जा रही है। अब डीवीडी और ब्लू रे डिस्क ने मार्केट में जगह बना ली है। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम इसके साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। CDs and DVDs are known as optical discs. Let me tell you about the hard disk now. A hard disk can contain much more data than either a CD or DVD. The hard disk is placed inside the CPU box. Look, this is the hard disk. Its surface is coated with a magnetic metal. A small recording head is placed very near to each surface to read and write. The hard disk can store all data until they are erased. What about हाँ जी, तो हार्ड डिस्क कहाँ पे होती है हमारे पास? हमारे सीपीयू में, है ना। सीपीयू के अंदर लगी होती है हार्ड डिस्क। और हमने अभी इसका पढ़ा ही था कि हार्ड डिस्क में अब हमारे पास टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क आ गई है मार्केट में। हम लोग जितने भी फाइल्स अपने कंप्यूटर पे सेव करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इवन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्ड डिस्क में ही इंस्टॉल होता है। तो हमारी जो एक तरह से कहा जाए कि सेकेंडरी मेमोरी में जो मेन मेमोरी है वो हार्ड डिस्क है, जिसके जो हमारे सीपीयू के अंदर ही ऑलरेडी लगी हुई। the pen drive? The pen drive is a pen-like device. It is attached outside the computer's CPU cabinet and on a USB port. A pen drive can also store large amount of data. A pen drive is the most convenient device to carry data from one place to another, as we can put it. हाँ जी, तो अब हम आ रहे हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का एक और नाम है, क्या कहते हैं हम पेन ड्राइव को? फ्लैश ड्राइव। यस, फ्लैश ड्राइव। तो पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं। ये आपके पास बुक में आपको दिया हुआ है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अभी हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, CDR और CDR, ठीक है। तो पेन ड्राइव सबसे अच्छा हमारा स्टोरेज मीडियम है, जिसको आप इजीली अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं और गीगाबाइट्स में आता है। आप इजीली अपनी फाइल सेव करते हैं, डिलीट करते हैं। कोई आपको स्पेशली इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सीडी को तो हम प्रॉपर बड़े ध्यान से रखते हैं कि कहीं उस पर स्क्रैचेस ना आ जाए, बट पेन ड्राइव को तो हम बिल्कुल रफली यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो अपनी पॉकेट में एक पेन ड्राइव रख के आराम से स्कूल भी आ जाते हैं। कभी फाइल्स दिखानी होती है, कॉलेजेस में भी हम मोस्टली हर एक बच्चों के पास देखते हैं एक छोटी सी पेन ड्राइव होती है आजकल। तो बहुत अच्छा स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव और बहुत पॉपुलर है। CDR and CDRW, what is the difference between them? CDR and CDRW, हम लोग जब CD परचेज करते हैं तो हमें CD के ऊपर प्रिंट मिलता है, CDR और RW। कौन बता रहे हैं? And one is only readable, the other is readable as well as it can be erased and write. It can be written once Rewritable. more. So it is Yes, rewritable. रीराइटेबल फॉर्म, वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप CDR परचेज करते हैं, दैट मीन्स कि आप एक ही बार उस CD के अंदर अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो, ओनली वन टाइम।
उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि मैं उस फाइल को डिलीट करके कि आप कोई और कंटेंट सेव कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं। इट इज रीड ओनली। आप सिर्फ एक ही बार उसमें फाइल सेव कर सकते हैं और उसके बाद वो आपकी सीडी ब्लॉक हो जाती है। बट रीड एंड राइटेबल, आप जिस तरह से पेन ड्राइव को हमने कहा कि आप फाइल्स को डिलीट कर रहे हैं और आप फिर उसके ऊपर सेव कर रहे हैं, तो उसके लिए आप रीड या राइटेबल सीडी परचेज करें। तो जब भी हम सीडीज परचेज करते हैं तो ध्यान में रखेंगे कि उसके ऊपर क्या मेंशन, कि आपकी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन थी, कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करें। चलो नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं आईसीटी। व्हाट इज आईसीटी? Just wait a minute. Okay. Now I am sharing the screen. ICT. ICT is an acronym which is formed by the terms Information and Communication Technology. It is referred to as the use of modern technologies to aid in analysis, storage, processing, as well as communication of information. In order to help you understand the basic concept of ICT, I will be explaining the three terms that make up the acronym ICT, which are information, communication, and technology. Now let us take a look at what information is. Information is generally referred to as data which can be recorded, organized, or interpreted within a context in order to convey meaning. It can also be defined as a processed data. Let us look at communication. Communication is the transfer of information or ideas among persons through different systems, media, or devices such as computer, television, radio, internet, and so on. कम्युनिकेट करना, दैट इज कम्युनिकेशन। आप किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को? तो आईसीटी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? ये एक्चुअली आपका जो है कॉम्बिनेशन है आईसीटी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। Technology. Technology is generally defined as the making, modification, application, and usage of tools, systems, or machines for the purpose of solving problems in a less time period. After defining the three terms,
that make up ICT, we are going to look at the basic concept of ICT. ICT is a combination of different communication devices. It is basically referred to those technologies which provide access to information by means of telecommunication. ICT is very similar to IT, information technology, but it focuses mainly on different communication technologies such as internet and cell phone, which are also the best communication media today. After looking at the basic concept of ICT, it is important we look at the various applications of ICT. ICT enables us to communicate with people by using computer, internet, and cell phone. The role of ICT in teaching and learning. ICT has helped in teaching and learning through various ways. एक्चुअली आईसीटी आपका ये जो टॉपिक है ये आपका सेकेंड चैप्टर है यूनिट 2 आईसीटी के बारे में। और आजकल अगर हम देखें तो टीचिंग पर्पस से आपका कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो क्लासरूम में हमने देखा था ब्लैक बोर्ड और एक वाइट चॉक होता था, लेकिन आजकल हम लोगों का जो क्लासरूम है वो स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं। वी हैव अ कंप्यूटर एंड अ प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड, है ना। हमारे पास पूरा स्मार्ट क्लासेस का लुक होता है। हम बच्चों को इवन जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं वो आप उनको प्रैक्टिकली दिखाते भी हैं ताकि उनको इजीली क्लियर हो जाए हर चीज़, हर टॉपिक के बारे में। तो आजकल हमारे लिए सिर्फ बुक रीडिंग ही सफिशिएंट नहीं है, हम प्रैक्टिकली नॉलेज भी शेयर करते हैं। तो इंटरनेट की टर्म्स में अगर हम देखें, कंप्यूटर की टर्म्स में देखें, तो हमारी जो क्लासेस हैं अब वो स्मार्ट क्लासेस में चेंज हो गई। तो इसके लिए कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। और आईसीटी आपका जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके इंटरनेट से ही रिलेटेड टर्म्स हैं। It has enabled teachers and learners to teach and learn well, work efficiently, share ideas easily, solve different problems easily, as well as achieve goals in lesser period of time. So, this is to say that ICT can be used as an aid to computer teaching as well as learning. This is where we'll be drawing it close on today's tutorial. So this is your ICT, हमारा सेकेंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन to ICT. Now next topic is internal network and external network. इंटरनल एंड एक्सटर्नल जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आते हैं, लैन, मैन एंड वैन, जिसको हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क्स के थ्रू लर्न करना है। सो जस्ट वेट। LAN is local area network within a building, जिसको आप कहते हैं अगर हम नेटवर्किंग करते हैं, that is a LAN. Just wait, now I am sharing the screen.
A computer network is a group of computers, connected with each other, through a transmission medium, such as cable, wire etc. There are mainly three types of computer networks, based on their size. Local area network, metropolitan area network, wide area network. आपकी बुक में एक्चुअली दिया है इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क, लेकिन जब आप उस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको उसमें यही 3 टर्म्स मिलेंगी, लैन, मैन एंड वैन, इंटरनल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क. Local area network. Local area network is a group of computers, connected with each other, in a small places such as school, hospital, etc. LAN is used for connecting 2 or more personal computers, through a communication medium such as twisted pair, coaxial cable, etc. LAN is secure, because it can't be accessed from outside. In LAN, the data is transferred at an extremely faster rate. It is less costly, as it is built with inexpensive hardware, such as hubs, network adapters, and Ethernet cables. आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि जब आपको कभी भी लिखने के लिए आए तो आप लैन के बारे में लिख सको. You can take a screenshot. Internal network है LAN. It is not an external network. It is an internal network. Within a building. एक ही बिल्डिंग में अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तब हम लोग यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. Metropolitan area network. A metropolitan area network is a network that covers a large geographic area by interconnecting a different LAN to form a larger network. In metropolitan area network, various local area networks are connected with each other through telephone lines. Metropolitan area network covers the larger area of a city or town. Wide area network. A wide area network is a network that extends over a large geographical area. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो उसका एग्जांपल है केबल टीवी. आपने देखा होगा आपके एरिया में जब केबल टीवी वाले होते हैं उनका एक एरिया होता है कि उसी एरिया के अंदर वो नेटवर्किंग करते हैं. मेट्रोपॉलिटन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब हम कर रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क. Such as countries, continent or even a whole world. The internet is one of the biggest wide area network in the world. The size of the WAN is larger than LAN and MAN. So, अगर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क की, तो इसमें आप सिटी टू सिटी अगर आप कोई भी नेटवर्किंग कर रहे हैं या इंटरनेट, इन्होंने कहा है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क. आपकी बुक में आपको 3 टाइप्स के दिए थे. बुक में 2 टाइप्स के दे रखे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में आपको लैन पूरा दिया हुआ है और एक्सटर्नल नेटवर्क्स में इन्होंने आपको वैन के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क. जब आप लोग एक बार रीडिंग करेंगे अपनी बुक की तो आप उसमें नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट भी रीड कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेते हैं साइबर अटैक. जस्ट वेट.
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है साइबर अटैक, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। Now, just a minute, I'm showing the screen. Discuss in particular what they are, how the threat works, and how to protect yourself. Okay, so now let's jump in. Now, cyber attacks are taking place all the time. Even as we speak, the security of some organization, big or small, is being compromised. For example, if you visit this site out here, that is ThreatCloud, you can actually view all the cyber attacks that are actually happening right now. Let me just give you a quick demonstration of how that looks like. Okay, so as you guys can see out here, हाँ जी, तो साइबर अटैक्स आप लोग अपने गूगल पे भी अगर डाल के देखेंगे साइबर अटैक्स थ्रेट मैप, तो आपको लाइव इस वक्त कितने कहाँ से कहाँ साइबर अटैक हो रहा है, कहाँ हैकिंग हो रही है, आपको उसका पूरा मैप दिखता है। these are all the places that are being compromised right now. The red parts actually show us the part that is being compromised, and the yellow places actually show us from where it's being compromised from. Okay, as you guys can see now that someone from the Netherlands is actually attacking this place and someone from USA was attacking Mexico. It's a pretty interesting site and actually gives you a scale of how many cyber attacks are actually happening all the time in the world. Okay, now getting back, I think looking at all these types of cyber attacks, it's only necessary that we educate ourselves about all the types of cyber threats that we have. So these are the 8 cyber threats that we're going to be discussing today. Firstly, we're going to start with malware. So malware is an all-encompassing term for a variety of cyber attacks, including Trojans, viruses, and worms. Malware is simply defined as code with malicious intent that typically steals data or destroys something on the computer. The way malware goes about doing its damage can be helpful in categorizing what kind of malware you're dealing with. So let's discuss it. So first of all, viruses. Like their biological namesakes, viruses attach themselves to clean files and infect other clean files, and they can spread uncontrollably, damaging a system's core functionality and deleting or corrupting files. They usually appear as executable files that you might have. So what is a virus? क्या होता है वायरस? What is a virus? It's a malicious program. Is a program. It is a program. Actually, वायरस कोई कीड़ा नहीं है जो कंप्यूटर में आता है. It is just a program. जो आप कुछ भी अगर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो ये आपकी डाउनलोडिंग में आपकी फाइल के साथ अटैच होकर आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाता है और आपकी सिस्टम को डैमेज करता है, आपकी फाइल्स को करप्ट करता है. तो वायरस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स के वायरस होते हैं हमारे पास, लेकिन मेनली हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वायरस के बारे में, तो वायरस एक्चुअली क्या होता है, प्रोग्राम, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है. आज आपके कंप्यूटर पे अगर 1 वायरस है तो कल 2 हो जाएंगे, परसों 4 हो जाएंगे, 4 का 8, 8 का 16. तो वायरस में एक प्रोग्रामेबल प्रोग्राम है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और आपके सिस्टम को डैमेज करता है. मेनली हम लोग इंटरनेट से जब फाइल्स डाउनलोड करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं, या कई बार ईमेल में आपके पास अनऑथराइज पर्सन्स की ईमेल आती है जिनको आप जानते भी नहीं हैं. कई बार उनकी भी मेल्स आपके पास आती हैं कि आपको फाइल डाउनलोड करिए और आप देखिए कि आपको क्या मिल रहा है. तो आप जब उस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो आपके सिस्टम पे वायरस आ जाता है.
Now, downloaded from the internet. Then there are also Trojans. Now, this kind of malware disguises itself as legitimate software or is included in legitimate software that can be tampered with. It tends to act discreetly and creates backdoors in your security to let other malwares in. Then we have worms. Worms infect entire networks of devices, either local or across the internet, by using the network's interfaces. It uses each consecutive infected machine to infect more. And then we have botnets and such, where botnets are networks of infected computers that are made to work together under the controller of an attacker. So basically, you can encounter malware if you have some OS vulnerabilities, or if you download some illegitimate software from somewhere, or you have some other email attachment that was compromised with. Okay, so how exactly do you remove malware, or how exactly do you fight against it? Well, each form of malware has its own way of infecting and damaging computers and data. And so each one requires a different malware removal method. The best way to prevent malware is to avoid clicking on links or downloading attachments from unknown senders. And this is sometimes done by deploying a robust and updated firewall, which prevents the transfer of large data files over the network in a hope to weed out attachments that may contain malware. It's also फायरवॉल सिस्टम, हम कई बार पढ़ते हैं कि हमारे कंप्यूटर का फायरवॉल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. दैट मीन्स कि आपके कंप्यूटर पे अपडेटेड एंटीवायरस होना चाहिए ताकि आपके सिस्टम पे वायरस अटैक ना करे. कई बार जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेन टारगेट होता है हैकर्स. लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके सिस्टम को हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए मोस्टली ऑफिसेज में आपने देखा होगा या बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने देखा है वहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं किया जाता. दे आर यूजिंग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि इसका फायरवॉल प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है. वो वेबसाइट्स ऑन ही नहीं होती जहां पर इसको लगता है कि वायरस है. ये बहुत अच्छा फायरवॉल सिस्टम आपके कंप्यूटर पे होना चाहिए. also important to make sure your computer's operating system, whether it be Windows, Mac OS, Linux, uses the most up-to-date security updates. And software programmers update programs frequently to address any holes or weak points. And it's important to install all these updates as well as to decrease your own system weaknesses. So next up on our list of cyber threats, we have phishing. So what exactly is phishing? Well, often posing as a request for data from a trusted third party, phishing attacks are sent via email and ask users to click on a link and enter their personal data. Phishing emails have gotten much more sophisticated in recent years and making it difficult for some people to discern a legitimate request for information from a false one. Now, फिशिंग का हमने एक एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कई बार आपके पास मेल्स आती हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग इन करिए अदरवाइज आपका फेसबुक अकाउंट बंद हो रहा है. और वहाँ पे लिंक भी आता है कि आप इस पे क्लिक करिए, क्लिक हियर. तो जब आप उस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो सेम पेज ऑन होता है जैसे आपका फेसबुक पेज होता है, लॉग इन पेज, सेम पेज ऑन होता है. और आप जैसे ही उसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यानी आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है. तो इस टाइप के कई मैसेजेस हमारे ईमेल्स पे आते हैं जिसका ध्यान आपको रखना है कि आप कहीं पर भी अपनी मेल आईडी या पासवर्ड आप कहीं अननोन वेबसाइट्स पे तो नहीं एंटर करें. ऐसी वेबसाइट्स जो सिक्योर्ड नहीं है. fall into the same category as spam, but are way more harmful than just a simple ad. So, how exactly does phishing work? Well, most people associate phishing with email messages that spoof or mimic bank, credit card companies, or other businesses like Amazon, eBay, and Facebook. These messages look authentic and attempt to get victims to reveal their personal information. But email messages are only one small piece of a phishing scam. From beginning to end, the process involves 5 steps. The first step is planning. The phisher must decide which business to target and determine how to get email addresses for the customers of that business. Then they must go through the setup phase. Once they know which business to spoof and who their victims are, phishers create methods for delivering the messages and collecting the data. Then they have to execute the attack, and this is the step most people are familiar with.
That is, the phisher sends a phony message that appears to be from a reputable source. After that, the phisher records the information the victims enter into the web page or pop-up windows. And in the last step, which is basically identity theft and fraud, the phishers use the information they've gathered to make illegal purchases or otherwise commit fraud. And as many as a fourth of the victims never fully recover. So how exactly can you be actually preventing yourself from getting phished? Well, the only thing that you can do is being aware of how phishing emails actually work. So first of all, a phishing email has some very specific properties. So firstly, you will have something like a very generalized way of addressing someone, like dear client. Then your message will not be actually from a very reputable source. So out here, as you can see, it's written as Amazon on the label, but if you actually inspect, हाँ, जैसे इन्होंने दिया है ना, क्लिक हेयर टू अनलॉक, इसी टाइप के मैसेजेस बहुत कई बार आते हैं. जैसे ही आप उस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, आपका वो हैक हो जाता है अकाउंट. the email address that it came from, it's from management@maisoncanada.ca, which is not exactly a legitimate Amazon address. Third, you can actually hover over the redirect links and see where they actually redirect you to. Now, this redirects me to www.fakeamazon.com, as you can see out here. So basically, you know this is actually a phishing email, and you should actually report this email to your administrators or anybody else that you think is supposed to be concerned with this. Also, let me give you guys a quick demonstration on how phishing actually works from the perspective of an attacker. So first of all, I have actually created a phishing website for harvesting Facebook credentials. I simply just took the source code of the Facebook login page and pasted it, and then made a backend code in PHP, which makes the point out here is to actually make you aware of how this works. I just फिशिंग logged पॉइंट in, से हम आगे but on पहुंचते हैं. a normal, I've been redirected to the original Facebook touch emails. So now jumping back to our session, the next type of cyber attacks we're going to discuss is password attacks. So an attempt to obtain or decrypt a user's password for illegal use is exactly what a password attack is. Hackers can use cracking programs, dictionary attacks, and password sniffers in password attacks. Password cracking refers to various measures used to discover computer passwords. This is usually accomplished by recovering passwords from data stored in or transported from a computer system. Password cracking is done by either repeatedly guessing the password, usually through a computer algorithm in which the computer tries numerous combinations until the password is successfully discovered. Now, password. हाँ जी, तो पासवर्ड हम लोग जब भी एक्चुअली अपने कंप्यूटर्स में डालते हैं, अपने ईमेल्स का होता है, फेसबुक अकाउंट का होता है, तो पासवर्ड हमेशा कॉम्बिनेशंस में होना चाहिए. सिंपल पासवर्ड हम लोग सोचते हैं कि अगर हम सिंपल पासवर्ड रखेंगे तो वो हमें याद रहेगा, बट आप उस सिंपल पासवर्ड को भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं. आप उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन रखिए, आप उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल की उसमें ऐड करिए और कुछ नंबर्स ऐड करिए. तो पासवर्ड हमेशा आपके अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में होना चाहिए, अल्फाबेट्स, नंबर्स और कुछ स्पेशल कीज. अल्फाबेट्स भी हमेशा कैपिटल या स्मॉल की टर्म्स में होना चाहिए. तो अल्फाबेट जब भी हम पासवर्ड डालते हैं, और एक पासवर्ड हमें कभी भी किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना, कभी भी किसी को नहीं बताना होगा. Attacks can be done for several reasons, but the most malicious reason is in order to gain unauthorized access to a computer with the computer's owner's awareness not being in place. Now, this results in cybercrime, such as stealing passwords for the purpose of accessing bank information. Now, today, there are three common methods used to break into a password-protected system. The first is a brute force attack. A hacker uses a computer program or script to try to log in with possible password combinations, usually starting with the easiest to guess password. So just think, if a hacker has a company list, he or she can easily guess usernames. If even one of the users has a password 123, he will quickly be able to get in. The next are dictionary attacks. Now, a hacker uses a program or script to try to log in by cycling through the combinations of common words. In contrast with brute force attacks, where a large proportion key space is searched systematically, a dictionary attack tries only those possibilities which are most likely to succeed, typically derived from a list of words, for example, a dictionary. Generally, dictionary attacks succeed because most people have a tendency to choose passwords which are short
or you should never use words that are actually in the dictionary. It's always advisable to use garbage words that make no sense for passwords, as they just increase your security. So moving on, we're going to discuss DDoS attacks. So what exactly is a DDoS or a DOS attack? Well, first of all, it stands for Distributed Denial of Service, and a DOS attack focuses on disrupting the service to a network, as the name suggests. Attackers send high volume of data of traffic through the network until the network becomes overloaded. हाँ जी, तो हमारे एक्चुअली कोर्स में तो ये DDoS नहीं दिया हुआ, प्रिवेंशंस हैं हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपली हमें साइबर अटैक टाइप्स हमें दिए थे कि कितनी टाइप्स के साइबर अटैक हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर स्पेस। आफ्टर क्लास फिर आप लोग एक बार बुक जरूर रीड कर लेना, ताकि प्रॉब्लम्स जहाँ पर भी हैं वो आपकी सारी क्लियर हो जाए। व्हाट इज साइबर स्पेस? साइबर स्पेस की हम लोग जब भी बात करते हैं तो मीन्स आपको इंटरनेट पे एक ऐसा स्पेस जहां हम अपनी फाइल्स को भी सेव करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ साइबर स्पेस। ठीक है, हम जस्ट स्पेस में अगर हम इसको डिफ़ाइन करने के रूप में कहें तो साइबर स्पेस जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट है या एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इंफॉर्मेशंस एक्सेस करने की या फिर पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाता है। सिंपली आप इसको कह सकते हो कि इंटरनेट के ज़रिए या वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए आप जो इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं उसी को हम साइबर स्पेस बोलते हैं, वो जगह जहां पे आप ये काम कर रहे हैं। साइबर स्पेस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम इंटरनेट को इंक्लूड करते हैं। तो छोटी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं इंटरनेट के बारे में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो 1960 में शुरू किया गया था। ARPANET इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था और इसको इनिशिएट किया था कुछ गवर्नमेंट और रिसर्च प्रोफेशनल्स द्वारा कि उनको जो इंफॉर्मेशंस शेयर करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो सिक्योर तरीके से ट्रांसमिट की जा सके, उस पर्पस के लिए इस कंसेप्ट को ARPANET को इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट एक्चुअली कभी सोच के नहीं डेवलप हुआ था कि हम पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इंटरनेट जब लॉन्च हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था, तो एक छोटा सा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट था कि मिलिट्री पर्सन्स अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं चाहते थे कि वो कहीं किसी के गलत हाथों में लगे, तो उन्होंने एक छोटा सा नेटवर्क सिस्टम स्टार्ट किया था जिसके थ्रू वो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर करते थे। और उस नेटवर्क सिस्टम को नाम दिया गया था ARPANET। पर धीरे धीरे इस नेटवर्क सिस्टम में स्कूल, कॉलेजेस, कंपनीज ऐड होते चले गए, फिर एडवर्टाइजमेंट्स देना स्टार्ट हो गया और फिर इसको 1982 में नाम दिया गया इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो कभी ये सोचा नहीं था कि हम कभी पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे। साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, कुछ नए फीचर्स इसके अंदर ऐड हुए। स्टार्टिंग में इसका जो मेन रोल था जस्ट सिंपल इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता था। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट इतना एक्सपेंड हो चुका है, इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट इतना बड़ा हो चुका है कि हम सब चीज़ें आजकल इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर हम आज तक के इंटरनेट के पूरे लाइफ सर्कल को देखें
तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। जैसे पहला चेंज 1978 के अंदर UUCP यानी यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल के रूप में डिस्कस हुआ। प्रोटोकॉल के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही यूजनेट का कंसेप्ट लॉन्च हुआ 1979 के अंदर। यूजनेट बेसिकली किसी टॉपिक पे डिस्कशन करने और एक्सपर्ट्स की राय जानने का एक कंसेप्ट था। और उसके बाद मोज़ैक ब्राउज़र के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आज हम बहुत सारे ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे ब्राउज़र्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं एनाटमी ऑफ वेब एड्रेस की। वेब एड्रेस क्या होता है, तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन पे एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। मैंने वेब ब्राउज़र ओपन किया है फायरफॉक्स। तो इसके अंदर मान लीजिए मैं एक वेबसाइट का एड्रेस लिखता हूँ www.yahoo.com। ये मैंने इसके अंदर एड्रेस लिखा। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ एड्रेस में चेंजेस आए हैं। इसमें HTTPS जो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर सर्विस है जो इसके अंदर ऐड होती है, और भी कुछ इसमें चेंजेस आए हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर www.amazon.in एंटर करता हूँ तो अभी भी इसके अंदर देखिए स्टार्टिंग में HTTPS प्रोटोकॉल ऐड हो गया। तो हमारे पास कई बार 2 टाइप्स के प्रोटोकॉल होते हैं। कई बार हमारी वेबसाइट्स के आगे लिखा आता है HTTP और कई बार हम देखते हैं लिखा आता है HTTPS। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? व्हाट इज HTTP और HTTPS? Yes, class. What is HTTPS? Hypertext Transfer Secure. और S stands for Secure. तो जब भी आप कभी भी डेबिट या क्रेडिट करते हैं, कैश की टर्म्स में अगर आप काम करते हैं, तो हमेशा आप चेक करिए कि आपका पेज सिक्योर्ड पेज है कि नहीं। HTTPS होना चाहिए। HTTP अगर होता है तो आप उसमें कभी भी मनी ट्रांजैक्शन के काम मत करा करो। दैट इज नॉट अ सिक्योर्ड पेज। तो जब भी आप प्रॉपर वेबसाइट का जो ओरिजिनल पेज जब भी ऑन होगा वो हमेशा HTTPS करके आएगा। अगर मैं इसमें किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ, सपोज मैं कंप्यूटर्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेब एड्रेसेस में चेंजेस आ गए। अब यहाँ पे जो पेज ओपन हुआ है ये कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, क्योंकि मैंने लिंक पे क्लिक किया था तो यहाँ पे एड्रेस भी चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई, और हमारे पास यही जो एड्रेस बार में कंप्लीट एड्रेस डिस्प्ले होता है, इसी को हम वेब एड्रेस बोलते हैं, कि जिसकी हेल्प से हमें इंफॉर्मेशंस हमारे ब्राउज़र के अंदर अलग अलग पेजेस के फॉर्म में डिस्प्ले होती हैं। सपोज़ आपने ऑडियो पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब अमेज़न में ये एड्रेस जो है चेंज हो गया। अगर हम कैमरा से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका व्यू जो है वो चेंज हो जाता है। लैपटॉप्स एंड एक्सेसरीज में क्लिक करते हैं तो इसमें ये टॉप, इलेक्ट्रिक, मेगा, ये चेंजेस होते हैं। तो एड्रेसेस जो हैं हर पेज के लिए अलग होता है, इसी को हम इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। newyorktimes.com है और टेक इसका फोल्डर है और index.html है। इसी को अपने एक्सप्लेन अगर करते हैं तो सबसे पहले देखिए HTTP जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जो एड्रेस हमने लिखा है इसको सर्वर तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी HTTP प्रोटोकॉल की होती है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फिर उसके बाद www होस्ट नेम होता है जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है सर्वर तक पहुंचता है। NY टाइम्स जो है ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे आपका वो डेटा रखा गया है, जिस कंप्यूटर पे वो डेटा रखा गया है। .com जो है ये टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। ये टाइप बताता है किसी वेबसाइट का कि किसी में .com लगा होता है, किसी के अंदर हाँ जी .com
मीन्स कौन सी साइट्स होती हैं .com वाली? कमर्शियल कमर्शियल वेबसाइट्स। सेम ऐसे ही हमारे पास होती हैं ORG। ORG मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब भी आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जहां आपको मनी ट्रांजैक्शन का काम है, पैसों की लेन देन है, दैट इज योर कमर्शियल वेबसाइट्स। लेकिन जब आप किसी कॉलेज की या स्कूल की या आप किसी की जिसमें सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन। उनके वेबसाइट्स के पीछे .org होता है। एजुकेशनल वेबसाइट .edu, मिलिट्री वेबसाइट .mil, गवर्नमेंट वेबसाइट्स .gov। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा डोमेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भी कई बार हम लास्ट में देखते हैं .in लगा होता है, दैट इज इंडिया। आप कहाँ की द वेबसाइट डॉट .gov लगा होता है, यानी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उसके लास्ट में जो डोमेन होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, वो .gov होता है। और ऑर्गेनाइजेशंस की अगर वेबसाइट होंगी तो उनके लास्ट में .org लिखा हुआ होगा। तो ऐसे ही टेक जो हमारे एड्रेस के अंदर आ रहा है, ये फोल्डर का नाम है, यानी इंफॉर्मेशंस को फोल्डर्स में अरेंज करके रखा जाता है। ऐसे ही सिमिलरली लास्ट जो इंफॉर्मेशन आ रही है index.html, ये हमारी फाइल का नाम होती है जो ब्राउज़र में एक्चुअली ओपन होती है। बाकी सारी चीज़ें सपोर्टिव हैं जो इस पेज को हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल्स, जो हम बात कर रहे थे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स एक्चुअल में एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं इंटरनेट यूज़र्स द्वारा भी और इंटरनेट डिवाइसेस द्वारा भी, जो उसका कम्युनिकेशन पर्पस में यूज़ हो रहे होते हैं। तो हाँ जी, तो प्रोटोकॉल्स तो एक्चुअली हम लोगों के में नहीं दिया हुआ था, हमारे में सिर्फ साइबर स्पेस से रिलेटेड था। चलिए एक लास्ट टॉपिक जो हम आज का ले रहे हैं, दैट इज साइबर क्राइम। क्या होता है साइबर क्राइम? इंटरनेट के थ्रू अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी, लेकिन वो भी अगर आप नेट के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन अगर आप कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, दैट इज योर साइबर क्राइम। चलिए, तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस बुक का। इसमें आपका हैकिंग भी इंक्लूड होता है, या आप भी किसी के फोन्स को हैक कर लेते हैं, हम उसके थ्रू मैसेजेस शेयर कर रहे हैं, दैट इज आल्सो योर क्रिमिनल एक्टिविटी। present with the help of certain unlawful methods, if they can access your computer. Cybercrime is an illegal activity committed over the internet. Now if we were to define how and what the cybercrime is, so basically when we try to define cybercrime, the term cybercrime is not defined in any statute or rule book. So basically it comes from cyber, which is related to computers and internet, or anything related to IT sector. Therefore it stands to a reason that cyber crimes are offenses relating to the computers, IT, internet, or virtual reality, right? So in a simple language, crime committed using a computer and internet to steal the data or information or even manipulate it is a cyber crime. Just to give you an idea of what exactly it is, I've got some examples in here. Stealing credit card information, I think that's one of the most common cybercrime which happens, where a person's credit card information is stolen and used
illegally to buy or purchase a lot of items over the internet. Breaking into government website, manipulating the data is another form of cybercrime. A lot of government-sponsored cyber hacking also happens across the globe. Most of the time, nobody agrees to this, but this is another form of cybercrime. So this is a brief idea. We'll discuss that in the further part of the video also. Now, where did it started? What is the history? Where did it start? So the exact origin of cybercrime, which is like first instance in which someone committed a cybercrime using a computer network, is very tough to know. But something which we have traced, which we have in records, is something which we'll be discussing. So the first case of use of computer for theft was as old as 1973, where a local teller in a bank of New York used computer to embezzle over $2 million. Guys, you can understand 1973, $2 million, that would have been a huge amount by now. So that's the first case where computer was used in order to perform a theft. Then first spam email, which took place somewhere around 1978. So I don't know if you know this or not, what is your education level when you're watching this video, but sending spam emails is also one form of a cybercrime. In certain countries, you can be behind the bars for the same. First virus which was installed on Apple computer was in the year 1982. Now again, disrupting the systems, making sure that the systems don't perform up to the mark is also a form of cybercrime. So virus is one form of that, and that was एक्चुअली हम लोग network. Now when it comes मेन पॉइंट पर आते हैं, साइबर क्राइम हिस्ट्री को हम लोगों के कोर्स में हिस्ट्री तो नहीं दी है इन्होंने. यस, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. with the internet, it has happened through the call centers and lot many ways. Virus dissemination, installing, sending viruses via network, via email, via SMS, via spam links, etc. is one of the more common types of cybercrime. Then cyber terrorism, as we know that it's happening a lot. For a period of videos in the further part of the series, we'll also discuss each of them in detail. Computer vandalism is getting a lot of people involved nowadays. Software piracy, I think Southeast Asia is considered one of the bigger markets of software piracy. Spoofing, email spoofing is again a very largely used cybercrime. A lot of people fall victim of that. So let us understand how cyber crime and information security are connected, because as I said, over a period of this videos, तो ये एक्चुअली आपको टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स थे जो हमारे कोर्स से रिलेटेड भी थे. तो देखा जाए तो अब हमने एक तरह से अपनी बुक का टॉपिक जो था एलिमेंट्स ऑफ आईटी, आप एक बार इसको रीड करना, हमने ये फिनिश कर लिया. अब हमारी 4 o'clock जो क्लास है उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना लेना है. तो कहीं किसी को कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है? हाँ जी क्लास, कहीं किसी को कुछ डाउट्स हैं बेटा? हम लोग क्लास ओवर करें. यस क्लास, कुछ पूछना है बेटा या हम लोग क्लास ओवर करें? क्या हुआ सौरभ? मेरे पास वॉइस नहीं आ रही. हाँ जी क्लास, चलिए तो फिर हम ओवर करते हैं बेटा, टाइम भी हो गया है हमारा. कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिए. ओके, बाय बाय.